Hello everyone, welcome to Enviro Pioneers. Have you ever noticed that whenever we talk about the noise pollution or sound in our surrounding area, sound is measured as the sound level and its value is reported in decibel. So in this video, we are going to understand the concept of the sound level. Through last two lectures of the noise pollution, we have understood that the pressure variation or the oscillation generated by a vibrating surface in any medium, that is air, water or solid, and if these are audible to ear, that is referred as the sound, and this sound it travels as the wave of compression and the rarefactions, and it is associated with the pressure variation because the reason of compression it is the area which is having the higher pressure, while the rarefaction it is the reason of the low pressure. And this sound it travels only as the longitudinal wave in the air and the liquid medium, while both longitudinal as well as transverse wave in the solid medium. A sound waveform has three basic physical attributes: frequency, amplitude, and the temporal variation. So frequency it refers to number of oscillation passing through a point in 1 second. Amplitude it refers to the sound pressure, means the deviation from the mean ambient pressure, and there are many aspects to the temporal variation such as the sound duration. So this sound pressure it is proportional to the sound intensity. So when we have to measure the sound, then the magnitude of it can be measured in units of pressure, power and energy. Sound pressure it is also known as the acoustic pressure, and it is the local pressure deviation from the ambient atmospheric pressure caused by a sound wave. So as in the first lecture of the noise pollution, we saw that whenever there is vibration, it creates a series of compression and the rarefaction. And the compression are the reason where we are having the high pressure and high density, while the rarefaction are the reasons where we have the low pressure and the low density. So how much difference is there between the pressure produced by a sound wave and the normal barometric pressure at the same point in that particular space, that is referred as the sound pressure. यानी कि वाइब्रेशन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस मीडियम में इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड द रेयरफेक्शन, what is the difference between this pressure and the normal ambient pressure? That is the sound pressure. And this sound pressure is measured as the force per unit area, and the unit of sound pressure is Pascal. And this sound pressure it varies sinusoidally because at the region of compression we are having the high pressure, in the region of rarefaction we are having the low pressure, and again we are having high and low. So this sound pressure it varies sinusoidally, and it is convenient to use the root mean square value. And in air, this sound pressure it is measured using the microphone, and in water it is measured using the hydrophone. As sound pressure is proportional to intensity, we can also have the measure of the sound intensity. Intensity it is a measure of the amount of energy a wave carries per unit time across a unit area, and the units are watt per meter square or watt per centimeter square. This definition of the sound intensity can also be defined as the sound power per unit area, because power is the rate at which the energy is transferred by the wave, means the amount of energy that is transferred per unit of time. This sound intensity it also gives a measure of direction, because there will be energy flow in some direction but not in others. To explain this, here we have an example of a loudspeaker. अब जिस डायरेक्शन में इस लाउड स्पीकर को फेस किया गया है उस डायरेक्शन में साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी in comparison to the opposite direction. So this sound intensity it is a vector quantity because it gives the magnitude as well as the direction. Thus, the intensity of a sound wave can be defined as the sound power per unit area. So here we have I as the intensity, which is typically measured in the watt per square meter, and then P, this is the power of the sound source and it is measured in the watt, and A is the area over which this sound energy is spread. So it is mainly measured in the square meter. Sound intensity it results from two factors.
First, the amplitude of the sound wave, and second, how much distance they have traveled from the source. So the amplitude, it is the measure of the size of sound wave and depends on the amount of energy that started the wave. If a wave is started with much higher pressure, it will be having the more energy and high amplitude. And because of that, it will be having the greater intensity and they will sound louder. And as the sound waves travel farther from their source, the more spread out their energy become. So as we can see here that the vibration which is getting created, so this compression and rarefaction, it is getting spread in all the direction. So as the distance from the sound source increases, the area covered by the sound wave, it increases and the same amount of energy is spread over a greater area. And because of this, the intensity and the loudness of the sound decreases as the distance from the source increases. It can be further explained here. The sound generated from a point source, it obeys the inverse square law, which states that the intensity of sound is inversely proportional to the square of the distance from the source. I is inversely proportional to R square. अब ये इक्वेशन क्यों है वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं. This is a point source and any vibration which is getting generated from this point source, it will travel in all the direction in an spherical manner. तो यहाँ पे जो vibration है वो एक sphere create कर रहा है. अगर हमको एक स्फेयर का एरिया कैलकुलेट करना है सो दैट इज बाई 4 पाई आर स्क्वायर. अब इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला क्या देखा. इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया. सो हियर वी हैव दिस पावर एंड नीचे हमारा हो गया एरिया का इक्वेशन 4 पाई आर स्क्वायर. At the distance of 2r, the intensity value is 1/4 of this value because यहाँ पे जितनी energy थी that is getting spread in much wider area. और now at the distance of 3r जो intensity की value है that will be 1/9 of this particular value because अगर हम यहाँ इस equation में 3r रख के ये calculate करें तो 3r का square हमारा 9 आएगा. So I by 9. Here we can see the relative intensity and the distance from the point source. So at the distance of r, we are having the value of intensity as I. But जैसे जैसे distance हमारा increase हो रहा है, we can see here it is I by 4, I by 9, I by 16, 25, 36, I by 49, I by 64. Now the calculation part must be easy for you क्योंकि यहाँ पे हमको simply क्या करना है, ये जो इक्वेशन है p by 4 pi r स्क्वायर इसमें हमको ये डिस्टेंस को पुट करना है. तो 2r जब हमने रखा तो 2r का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट में है तो ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 हो गया. देन हमारा 3r जब हम रख रहे हैं 3r का हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा. एंड देन 4 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं 16. लाइकवाइज हम जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इसकी स्क्वायर वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं एंड देन वी आर गेटिंग दी decrease in the intensity value as the distance increases. Now for the same sound wave at two different distance from the source, this equation can be utilized to calculate the intensity, that is I1 R1 square is equal to I2 R2 square. So for example, if you have the intensity at the radius 1, then you can calculate the value of intensity at some other distance. We can hear the sound between the threshold of hearing and threshold of pain. And in terms of pressure, this is 20 micropascal to 100 pascal. So this 20 micropascal is the threshold of hearing and 100 pascal is the threshold of pain. Now, as we saw just now that जैसे जैसे हम sound source से दूर जा रहे हैं, ये sound की intensity या sound की loudness वो कम हो रही है. So if we have to measure the sound at different distance, तो अगर हम इसको इस पर्टिकुलर वैल्यू में मेजर कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग इज लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि ये 20 माइक्रोपास्कल है. तो 20 माइक्रोपास्कल मतलब 20 into 10 to power minus 6 मतलब हम कितने सारे पॉइंट में इसको मेंशन कर रहे हैं. तो 0.002 पास्कल हो गया या फिर अगर आप मेंशन कर रहे हो 0.02 पास्कल है, 1 पास्कल, 2 पास्कल, देयर आर नंबर ऑफ वैल्यूज. तो अगर हम किसी को ये बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा साउंड सोर्स है और यहाँ हमारा ऑब्जर्वर है, तो अगर हमको मेंशन करना है कि जैसे जैसे
डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इतनी वैल्यू है, इसका यहाँ पे इतना वैल्यू है. So to simplify this, a scale was developed which was based on the logarithm of the ratio of the measured quantities. So here is the equation L is equal to log Q by Q naught. So यहाँ पे जो L है that is the level and इसका जो unit था that is in bell and Q is the measured quantity and Q naught is the reference quantity and log is the logarithm in the base 10. तो ये Q मतलब हो गया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पे मेजर कर रहे हैं कि यहाँ पे साउंड प्रेशर इतना है तो इसको यूज करके हम एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन कर रहे हैं अगेंस्ट अ रेफरेंस क्वांटिटी. अब ये रेफरेंस क्वांटिटी क्या है? दैट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग. ओके, सो मेजरमेंट ऑन दिस स्केल कॉल्ड एज द लेवल्स एंड इसमें हम जो मेजरमेंट स्केल का यूनिट कह रहे हैं वो था बेल्स एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. But this bell also turned out to be a large unit, means still there was much larger variation in the values. Thus, for the convenience, this equation was divided by 10. So, the modified calculation or the modified formula is this one. Here we have the sound level. It is calculated using 10 log Q by Q naught and the values are mentioned in decibels. यहाँ पे एक पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी हम डेसिबल लिखते हैं D is always small and B is always in capital letter because D it represent the deci जबकि B जो है that represent the bell which is named after the Alexander Graham Bell. तो यहाँ पे आप हमेशा ये चीज ध्यान में रखो बिकॉज एट वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो ये जो हमारा डेसिबल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऑप्शंस में रहते हैं यानी स्मॉल डी स्मॉल बी हो गया या कुछ इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ऑलवेज स्मॉल डी एंड कैपिटल बी. As we saw in the starting of our this video that sound it can be measured in terms of the sound power, sound intensity and sound pressure. So this sound level it refers to logarithmic measurements of the audible vibrations and can be represented as the sound power level, sound pressure level and the sound intensity level. So sound power level is the measure of the rate at which the sound energy is emitted, reflected, transmitted or received per unit time. Then sound pressure level, it is the measure of the effective pressure of a sound relative to a reference value. And then sound intensity value, it is the measure of the intensity of sound relative to a reference value. So this sound pressure level and the sound intensity level, these are different from the sound intensity and the sound pressure because this sound level, it is defined in terms of a ratio and it is a unitless quantity which tells the level of the sound relative to a fixed standard and this fixed standard is the threshold of hearing. This is the basic equation to calculate the sound level. So ये हमारा basic formula है 10 log Q by Q naught. अभी जैसे हमने देखा कि जो साउंड है इट कैन बी मेजर्ड आइदर इन फॉर्म ऑफ द साउंड पावर या फिर साउंड इंटेंसिटी या फिर साउंड प्रेशर. तो अगर हम साउंड पावर एज अ मेजर्ड क्वांटिटी यूज कर रहे हैं तो हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया. L इज इक्वल टू 10 log W by W नॉट. अब W हमने क्यों यहाँ पे लिखा? टू सिंपली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो साउंड पावर लिया क्योंकि साउंड पावर का जो यूनिट है दैट इज वॉट. तो ये हमने यहाँ पे W मेंशन कर दिया. तो ये इक्वेशन दोनों सेम है बस हमने यहाँ पे इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए W मेंशन किया है. अब ये जो W नॉट है दैट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड इसका जो रेफरेंस पावर लेवल दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट इज द 10 to power minus 12 वॉट. अब अगर हम साउंड इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं किसी भी प्लेस पे तो अगर हमको साउंड लेवल कैलकुलेट करना है डेसिबल में तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला और यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बट यहाँ पे हम I by I नॉट लिख रहे हैं. तो अगर हम I by I नॉट लिख रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर है कि जो मेजर्ड क्वांटिटी है दैट इज द साउंड इंटेंसिटी. अब साउंड इंटेंसिटी हमने जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मेजर की उसको हम इस रेफरेंस वैल्यू के अगेंस्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं टू कैलकुलेट द साउंड लेवल. तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग दैट इज द फेंटेस्ट साउंड अ ह्यूमन कैन डिटेक्ट
it corresponds to sound intensity of 10 to power minus 12 watt per meter square. तो यहाँ पे हमारा जो साउंड पावर के केस में है रेफरेंस वैल्यू दैट इज 10 टू पावर माइनस 12 वॉट, और साउंड इंटेंसिटी के केस में है 10 टू पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर. देन थर्ड इज द साउंड प्रेशर लेवल, जहाँ पे हम साउंड प्रेशर को मेजर कर रहे हैं. तो साउंड वेव्स में जो प्रेशर है वो साइनसॉइडली चेंज होता है, इसलिए जो साउंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जनरली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ प्रेशर को मेजर करते हैं. तो अगर हम सेम इक्वेशन में अब यहाँ पे पी आर एम एस रख रहे हैं तो हम इसको सिंपली स्क्वायर कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे हो गया हमारा मेजर्ड क्वांटिटी और यहाँ हो गया हमारा रेफरेंस क्वांटिटी. अब इसको अगर हम स्क्वायर टर्म जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लाए तो दिस इक्वेशन बिकम 20 log PRMS, that is the measured root mean square value of the pressure, and जो ये वाला part है that is the reference pressure, that is the threshold of hearing, और जो established reference pressure है that is the 20 micropascal, that is the lowest sound pressure level a human can detect. So sound pressure level में भी हम हमारा basic formula ही use कर रहे हैं, but यहाँ पे because square term है तो ये थोड़ा सा modify हो जा रहा है into this equation जहाँ पे हम 20 log measured pressure value divided by the reference pressure value. Now here we have the sound pressure for the known sound, and the same sound is explained on the left hand side by the sound pressure and on the right hand side by the sound pressure level. So on the left hand side we can see here we are having from 20 micropascal to 100 pascal. So this is the threshold of hearing, and here we have the threshold of pain. So we can see here we are having the much larger variation in the values. But on the right hand side, the same sound is explained as the sound pressure level and the values are given in the form of decibel. So यहाँ पे अब जो हमारा ये larger variation था that is confined from 0 to 140 decibel. So when we have the sound as the sound level in decibel, understanding of the sound or the noise level in our surrounding, it is much easier. और यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखने की है कि इन टर्म्स ऑफ डेसिबल 0 डेसिबल इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग and in terms of pressure it is 20 micropascal. So here we have some of the sound source and the sound level in the decibel. This is the whisper, normal voice and the scream. It varies from 30 to 80 decibel. क्लासरूम में डिपेंडिंग अपॉन वेदर टीचर इज देयर और नॉट, लंच टाइम है या फिर कुछ और डिस्कशन चल रहा है, then it can be 40 to 80 decibel. So here we have this range. In traffic again it can varies from 50 to 90 decibel. जो हम earphone use करते हैं इसमें जो noise level है that can be 70 to 100 decibel. डिस्कोज या कंसर्ट्स में जो साउंड लेवल है दैट इज 85 टू 115 डेसिबल. जो लाउड स्पीकर्स बजते हैं वहां पे जो साउंड लेवल है इट कैन वेरीज फ्रॉम 90 टू 120 डेसिबल. नाउ हियर वी हैव दिस कलर कोडिंग. तो 80 डेसिबल तक वी आर हैविंग द नो रिस्क. दिस येलो कलर कोड इट इज शोइंग द हार्मफुलनेस थ्रेशोल्ड, यानी कि इसके ऊपर अगर हम साउंड को एक्सपोज हो रहे हैं वी कैन हैव द हार्मफुल इफेक्ट ऑन अस. Then above the 90 decibel to something 115 decibel, we can have the danger from the harmful sound. And above 115 decibel, there is irreversible damage. So we will discuss the health effect of the noise pollution in one of our upcoming videos. Now these are the three versions which are derived from the same formula. And if the sound is measured in the form of the sound power, हम ये formula use कर लेंगे जहाँ पे 10 log W by W naught. अगर आपके पास साउंड इंटेंसिटी की वैल्यू है और साउंड लेवल कैलकुलेट करना है तो हम 10 log I by I naught यूज कर रहे हैं. अगर साउंड प्रेशर मेंशन्ड है तो L is equal to 20 log मेजर्ड प्रेशर वैल्यू एंड रेफरेंस प्रेशर वैल्यू. तो ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. अभी इन दोनों में जो हमारा रेफरेंस वैल्यू है वो सेम है दैट इज 10 to power minus 12, और जो प्रेशर के टर्म्स में है वहां पे हमारा रेफरेंस वैल्यू है 20 माइक्रोपास्कल. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू सॉल्व द एंटीलॉग एंड द लॉगरिथमिक कैलकुलेशन. ये आप नोट कर लो और थोड़ा सा मेमोराइज कर लो क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सो दैट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स. सो एंटीलॉग ऑफ x is equal to 10 to power x and then log 10x is equal to x. Now on the basis of these equation and this formula there are some questions
which have been taken from the UGC net competitive exam. So here we have the first question जहाँ पे sound pressure पूछा है and then you have to calculate the sound pressure level. Second question is जहाँ पे noise level mentioned है and then you have to calculate the corresponding sound pressure level. And in the third question it is mentioned that if the sound pressure from a point source is itna watt, 0.001 watt, what is the sound level in decibel? So let us see the first question. So if the sound pressure is 0.02 Pascal, what is the sound pressure level? तो जब साउंड प्रेशर मेंशन्ड है देन इन दैट केस वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन L is equal to 20 log मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय द रेफरेंस वैल्यू ऑफ द प्रेशर. अब यहाँ पे हमारे पास जो साउंड प्रेशर मेजर्ड है दैट इज दी 0.02 पास्कल. तो अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पे 20 लॉग एंड देन दिस इज द मेजर्ड वैल्यू जो यहाँ मेंशन है तो हमने यहाँ रखा 0.02 और रेफरेंस वैल्यू क्या होगी दैट इज 20 माइक्रो पास्कल. तो हमने यहाँ पुट किया. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं वी कैन री राइट इट एज 20 log 2 into 10 to power minus 2 और इसको हम फर्दर कैलकुलेट करके 2 into 10 to power minus 5. अब इसको फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इक्वेशन जो यहाँ पे है ये बन जाएगा हमारा 20 log ये कैंसिल एंड ये जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 10 to power 3. अब हमने देखा 10 log 10 to power x is equal to x. ओके तो यहाँ पे अगर हम इसको सेम चीज यहाँ पे रखें तो दिस विल बिकम 20 log 10 to power 3 विल बिकम 3. तो ये हमारा हो गया 20 into 3 दैट विल बी 60 डेसिबल. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन तो किया है बट आप फिर भी इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना. सेकेंड क्वेश्चन वॉज नॉइज लेवल जहाँ पे हमको मेंशन है 80 डेसिबल एंड हमको करस्पॉन्डिंग साउंड प्रेशर लेवल पूछा है. तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे साउंड प्रेशर पूछा है. ठीक है तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास इसकी वैल्यू मेंशन है तो हम L is equal to 20 log P RMS डिवाइडेड बाई P नॉट RMS हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. लेकिन हमारे पास अब L की मेंशन है और हमको पूछ रहा है कि करस्पॉन्डिंग प्रेशर वैल्यू क्या है. तो अगर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से रखें जहाँ पे L की वैल्यू 80 डेसिबल है 20 log और यहाँ पे PRMS हमको कैलकुलेट करना है 20 into 10 to power minus 6 दैट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग. अब इसको फर्दर ये हमारा कैलकुलेशन हो गया 420 इसको हम कट आउट कर देंगे ये 4 हो गया log PRMS 20 into 10 to power minus 6 ये सेम उसी तरीके से. अब अगर हमको फर्दर कैलकुलेशन करना है तो हमको इसका एंटी लॉग लेना होगा. तो हमने इससे पहले देखा y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 10 टू पावर x. तो अगर हम इसका एंटी लॉग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू पावर 4 इक्वल टू अब ये लॉग हट गया तो पी आर एम एस डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये 10 टू पावर 4 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू. थर्ड क्वेश्चन वाज जहाँ पे साउंड पावर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज 0.001 वॉट एंड देन व्हाट इज द साउंड लेवल इन डेसिबल. नाउ अभी हमने इसके पहले जो दो डिस्कस किया वहां पे साउंड प्रेशर मेंशन था. एक में साउंड प्रेशर दिया था जहां पे आपको साउंड लेवल कैलकुलेट करना था. सेकंड जिसमें आपको साउंड लेवल दिया था एंड करस्पॉन्डिंग साउंड प्रेशर कैलकुलेट करना था. बट थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे साउंड पावर है. ठीक है तो हमने देखा था कि जब साउंड पावर और साउंड इंटेंसिटी है तो हम 10 log W by W नॉट या फिर 10 log I by I नॉट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. तो इन आवर क्वेश्चन वी हैव द साउंड पावर सो आई हैव रिटन हियर 10 log W by W नॉट एंड द रेफरेंस वैल्यू इन दिस केस विल बी 10 टू पावर माइनस 12 वॉट. तो ये मेरी तरफ से हिंट है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन and please let me know in the comment section that whether you are getting this answer or not. These are some of the references from where the content of today's video have been taken along with different books on the environmental science. Thank you for your continuous support. We will meet soon in the next video. Thank you.